हेलो नमस्कार वणक्कम। मैथ्स के चैप्टर 6 का आखिरी पार्ट यानी कि 6.4 और 6.5 जहां पर हम करेंगे उसमें आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 6.4 नेचर्स फेवरेट सीक्वेंस, द विरहांका एंड द फिबोनाची numbers. Now what exactly are we talking about? Now let me just give you a background about what exactly is Virahanka and Fibonacci. Now long ago, Virahanka, who was an Indian mathematician, he spoke about a special number pattern around the 7th century. Okay, and this was many years before Fibonacci, who was an Italian mathematician who wrote about the same pattern in Europe in 1202. Okay, so there was a difference of several centuries between Virahanka and Fibonacci, and that's why these two are combined together because they spoke about the same concept, though Virahanka spoke about it much earlier. So the Fibonacci numbers that we learned today actually started with Virahanka's idea. That is why they are called as Virahanka Fibonacci numbers. Now the pattern in Virahanka goes like this: 1, 2, 3, 5, 8. Now how do you get that, right? You get 1 plus 2 equals 3. 3 plus 2 equals 5. 5 plus 3 equals 8. 8 plus 5 equals 13. 13 plus 8 equals 21. 21 plus 13 equals 34. So this is the pattern that Virahanka spoke about. The only change that Fibonacci made, or the only difference between Virahanka and Fibonacci's method, is that Fibonacci talks about two ones, because one, okay, you're talking about one, and then you are kind of 1 plus 0, because there is nothing before this is 0, so then it becomes 1, and then it becomes 1 plus 1 equals 2. So he introduced an extra one. Otherwise there is no difference between Virahanka's method and Fibonacci's method. यहां तक का समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं. Let's take for an example जो मैंने अभी आपको बताया. 1 plus 1 equal to 2, 1 plus 2 equals to 3, 2 plus 3 equal to 5, 3 plus 5 equal to 8, and so on. So where do we see this in nature also? Then this number pattern actually appears in many natural things. कि अगर हम हमारे आपस के आसपास के वातावरण की तरफ देखें, वहां पर भी हमको इसी तरह का पैटर्न मिलेगा. जिस तरह से पत्तियां उगती हैं, द पेटल्स ऑफ फ्लावर, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और पाइन कोन्स हुआ, सनफ्लावर हुआ, या इवन शेल हुआ, उन सभी में ये विरहांका फिबोनाची मेथड दिखाई देता है, सीक्वेंस दिखाई देता है. नाउ फिबोनाची ने तो सीखा था इस सीक्वेंस के बारे में फ्रॉम इंडियन एंड अरेबिक मैथमेटिशियंस, लेकिन विरहांका वाज द फर्स्ट टू राइट अबाउट इट क्लियरली व्हेन स्टडीइंग पोएट्री रिदम्स, जिसको कि चंडास कहते हैं इन संस्कृत. ओके, नाउ तो इसको माना जाता है इट इज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड सीक्वेंसेस इन ऑल ऑफ मैथमेटिक्स, बिकॉज देयर इज अ पैटर्न व्हिच इज बीइंग मेड हियर, जिसको के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया, और ये पोएट्री में पहली बारी, कविता में पहली बारी डिस्कवर हुआ था. So the Virahanka numbers first came up thousands of years ago in the words of Sanskrit and Prakrit linguists in their study of poetry. और काफी सारी भाषाओं में, मराठी हो, मलयालम हो, तमिल हो, तेलुगु हो, उन सभी सिलेबल में इधर एक सिलेबल को लंबा या एक को छोटा माना जाता है. A long syllable is pronounced for a longer duration than a short duration. Like different syllables को अलग-अलग duration के लिए कहा जाता है. कुछ syllable they are a little longer than the other one, right? For example, I in English, though it's not specifically English, I will be small. लेकिन when you are saying M has a slightly longer duration than when compared to I. Okay, this leads to numerous mathematical questions which the ancient poets in these languages considered extensively. A number of important mathematical discoveries were made in the process of asking and answering these questions about poetry. Now, one of the important questions were how many rhythms are there in the 8 beats consisting on short syllables, 1 beat, and long beats. So these were questions concerning poetry. तो poetry को पहले understand किया, उसके बारे में सवाल पूछे, और वहीं से इस तरह का सीक्वेंस बनाया गया. जैसे कि कुछ होते हैं लॉन्ग, कुछ होते हैं शॉर्ट 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 शॉर्ट.
So if there are एक particular गाना हो या कुछ एक गीत गाना हो, तो हो सकता है उसमें you will take the longer route, right? कि लंबे लंबे कदम, जैसे कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको सरल भाषा में सुना बताता हूं, बिकॉज सभी को संगीत के बारे में जानकारी नहीं होगी। हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, आई टेल यू माई ओन एग्जाम्पल, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक इन द नेबरहुड पार्क, ओके। तो एक राउंड उस पार्क का लगाने के लिए, जहां तक मेरा कदमों का सवाल है, 300 स्टेप्स लगते हैं। तो अगर मेरे को स्मार्ट वॉच पहनने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, अगर मैंने एक राउंड लगा लिया तो मुझे मालूम है तकरीबन 300 कदम मैंने चल दिए हैं। तो अगर मैं 10 राउंड लगाता हूं तो मतलब कि 3000 स्टेप्स मैं पार्क का लगा चुका हूं, ओके। सो दैट इज माय आइडिया। लेकिन व्हेन आई गो विद let's say my daughter or someone who is a little elderly, who will actually take shorter steps, so हो सकता है उनके 350 या 400 steps हो, तो उनके स्मार्ट वॉच पे we have seen that their smartwatch records many more steps as compared to mine, and you will realize that even though we have covered the same distance, the one round of the park, so that's what we are concerned with. तो यहां पर भी कदमों का उसी तरह का बेसिक लॉजिक है। सो कैन यू फाइंड अदर्स? सो यहां पर हम देखते हैं, अगर 8 तक पहुंचना हो, और इसके बाद बारे में एक क्वेश्चन भी है बाद में, 8 का मतलब 2 2 2 2, यानी कि, और लेट्स से स्टेयरकेस पे चढ़ना है, ओके, स्टेयरकेस में 8 कदम है, तो आप कभी कभी होता है ना, स्पेशली ऑल ऑफ अस डू दैट, दो दो स्टेप्स एक एक बारी में चढ़ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ स्टेपिंग ऑन वन स्टेप एट ए टाइम। When we are in a hurry, we take 2 steps at a time. So you can go like this, but you can also go like this, 1 1 1 1 1 1 करके जा सकते हैं। या हो सकता है कि कुछ पहला 1 स्टेप लें, फिर सडनली 2 स्टेप लें, फिर दूसरा स्टेप लें, फिर 1 स्टेप लें, फिर 2 स्टेप लें, राइट? या इस तरह का सीक्वेंस। So अलग अलग sequence is possible, and that is what is called the different kind of rhythm. Sometimes you may take 1 step, sometimes you may need to take more than 1 step at a time. Now, अगर आपको यहां पर n equal to, अगर आपको यहां पर n equal to 1 है, तो 1 का एक तरीका ही होगा। अगर 2 कदम है तो you can either go 1 step at a time, 1 plus 1, or 2 steps at the same time. So that means there are 2 ways of reaching it. अगर n 3 है तो दैट मींस आप 1 plus 1 plus 1 कर सकते हैं, या पहले एक कदम एक स्टेप चढ़ सकते हैं और फिर दूसरे दोनों स्टेप्स को एक ही बारी में चढ़ सकते हैं, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो दैट मींस देयर आर 3 डिफरेंट वेज। अगर 4 की बात करें तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 1, this will be 1, this will be 1, this will be 1. That means 5 tarikas. Again, you see 1, 2, 3, 5. Next will be 8, then 11. So this is the Virahanka Fibonacci method. So this is the way you actually come to the conclusion that in daily life also you find this being used. Now trying using the number 5 as a sum of ones and twos in all possible ways in your notebook. How many ways did you find? Okay, you should find all 8 different ways. So agar I want you to kind of next one 5 hua, 6 hua, I want you to do it and then figure out whether you are able to find out agar 5 ka hai, n equal to 5 mein you should be able to come up with all the 8 different ways. Agar n equal to 6 hai, you should be able to come up with all the 11 different ways. This is your test. I want you to do it very easy. Just follow the same pattern. Okay. Now here is a systematic way to write down all the rhythms of short and long syllables having 5 beats. Write a 1 plus in front of all the rhythms having 4 beats, then a 2 plus in front of all rhythms having 3 beats. This gives us all the rhythms having 5 beats. So 5 ka is tarah se hai, 1 plus 1 plus 1, 1 plus this thing, and these are the 8 different ways in which you can do this. Okay, so 8 rhythms having 5 beats. So this is the way to write it. So इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है in terms of a question, जो कि हम बाद में figure it out वाले क्वेश्चंस में देखेंगे. Okay. Now 6 beat का, 7 beat का, we know that. Okay, same thing, no, 1 2 3 5 8 11 and so on, going on till 34. Use a systematic method to write down all the 6 beat rhythms. That is, write 6 as the sum of ones and twos in all possible ways. Did you get all 13 ways? Now
इस तरह से विरहांका ने इस तरह का सीक्वेंस बनाया था जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. ऑल दिस आई हैव दिस थिंग. दिस इज बेसिक हिस्ट्री. ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन mathematics question paper, so you can just go through this. Okay, I want you to go through this. So 8 beats का बात करें, so there will be 34 rhythms in that. Okay, 1 2 3 5 8 13 21 and 34. Write the next number after uh, कहाँ पे है? 1 minute, huh? Just getting messed up with my okay, चलिए वन पेज नंबर 142. I'm just keeping my book also open, otherwise confusion हो जाता है. ओके, सो पेज नंबर 142 में ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस आफ्टर 55. तो 55 के आगे कौन सा होगा? यू विल गेट 89, दैट इज 55 प्लस 34. करेक्ट है ना? 34 इससे पहले वाला है. अगर उसके बाद वाला देखना है, what will be the next sequence? अभी यहाँ पे 89 तक आ गए. Next one will be what? 89 plus 55, which will be 144. Then 144 plus 89 will be 233. Then 233 plus 144 will be 377. So this is how you go ahead with that. Okay. Now, what is the parity of each number in the sequence? Do you notice any pattern in the sequence of parities? Now, basically what this thing was, if you see the parity, the 1 is odd, then even, then odd, then even, then odd, odd, even, sorry, odd, this 21 is odd, even, odd, odd, even, odd, odd. So यहाँ पर आपको कोई पैटर्न कुछ दिख रहा है या नहीं? That is what is to be seen. तो यहाँ पर if you see, you mark which one is odd and which one is not even. So you realize that the parity is that every 3 terms is repeated as odd, odd, even. After, if you ignore the first 4 ones, I mean, yeah, I mean, this first 2 ones, then odd, odd, even, odd, odd, even, odd, odd, even, odd, odd, and the next one will be even, right? So the 377 plus 233 will be even, right? So this is how you work on it. The pattern, the parity that we are working out as a sequence is odd, odd, and even if you ignore the first 2 one. Okay. Now, what is the parity? हालांकि Fibonacci method में you will put 1 and 1. So then there also it works out odd, odd, even, odd, odd, even, odd, odd, even. So everything works out according to the Fibonacci method. Okay. Now here you see even in the petals, you know, this is a daisy with 13 petals, like 13, 21, 34 you are seeing. So there are different kind of petals, and if you can count this, you know, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, right? इसको count करेंगे, you will find 21. इसको count करेंगे, you will find 34. So even nature में भी इस तरह का एक pattern available है. ये काफी surprise और amazement वाली बात है. तो यहां पर तबले में, म्यूजिक वगैरह में भी इस तरह का यूज होता है. Now let's come to 6.5, which is digits in disguise. What exactly do we mean by that? यानी कि digits disguise का मतलब कुछ something जिसको कि छिपाया गया है. So in the calculations given below, now this is very interesting. इसको तो करने में मुझे बहुत मजा आया. In the calculations below, digits are replaced by letters. Each letter stands for a particular digit. Okay, you have to figure out which digit each letter stands for. This is very interesting. तो हमको कहा गया है कि 3 लेटर हैं, टी, टी और टी, यानी कि टी का वैल्यू एक ही है. तो तीनों को हम जब ऐड करेंगे तो हमको यूटी मिलता है, यानी कि ये वाला टी यहां पर होना चाहिए. ओके, तो कौन सा ऐसा नंबर को हम ऐड करें जिससे कि हमको नीचे पूरी तरह से वही वाला नंबर मिले? तो इसमें कौन सा होगा आप कीजिए. तो अगर हम
2 प्लस 2 करेंगे, ये तो 6 होगा। यहां पर हमको डबल डिजिट चाहिए, यहां पर सिंगल डिजिट है, 3 के साथ भी नहीं होगा। 4 प्लस 4 करें तो हमको डबल डिजिट तो मिल रहा है, लेकिन t का वैल्यू 4 है, तो यहां पर t का वैल्यू 2 आ रहा है। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट द राइट वन। सो द करेक्ट वन is 5. That is 5 plus 5 plus 5. That is t equals to 5. Okay, t equals to 5. And then it adds to 15, where this 5 is also being spoken about, right? So this t is correct, and u ka value becomes 1. Is this clear? T ka value becomes is 5. So we have one digit number when added to itself twice gives a two digit number. Now what could u and 2 be? तो यहां पर पूरा लॉजिक दिया गया है कि कैसे ये 15 होगा, जो मैंने आपको अभी समझाया। अब ये दूसरा वाला देखते हैं, K2 plus K2 equals HMM। तो इसको ना, इफ यू प्ले अराउंड विद मैथमेटिक्स एंड यू लव प्लेइंग विद नंबर्स, इसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। I can assure you, I found this the most enjoyable part of this lesson. So K2 यानी कि सेकेंड जो यूनिट वाला डिजिट है वो 2 है, तो हमको ये 10 वाले डिजिट में क्या होगा वो देखना है। सो सी ऑलवेज यू सी कि इसको करके यहां पर हमको ये वाले दोनों डिजिट सेम होंगे और ये वाला अलग से होगा, राइट? सो यहां पर हमको देखना है कि कौन सा यहां पर, सो इट कुड बी फ्रॉम 1 to 92, तो हम 1 वाला ही देख लेते हैं पहले। सो k का वैल्यू अगर 1 होगा, सो 12 प्लस 12, सॉरी नॉट 12, 1 2 3 4 करेंगे तो इट विल नॉट, 12 प्लस 12 विल बी ओनली 24, एंड दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट अ थ्री डिजिट नंबर। सो लेट्स लुक एट अ हायर डिजिट वैल्यू। तो हायर डिजिट वैल्यू देखे तो लेट्स ऐड 72 plus 72, so this is coming to 144, which perfectly matches. So m's value will be 4, k value will be 7, and h value will be 1. So this is all a matter of a guess game that you are able to play around with numbers and understand. You can do it with 52 pehle, 42 तो नहीं होगा because 42 plus 42 will be 84. 52 plus 52 will be 104, लेकिन 0 और 4 अलग अलग है, so this condition does not get met. Then we look at 62 plus 62, right? अगर हम 62 plus 62 करते हैं तो यहां पर 4 आता है और यहां पर 124 आता है। Again, this condition does not meet. So this is the only place where this condition actually is fulfilled, right? So that is what you need to take into account. I hope यहां तक आपको समझ में आ गया। There is no doubt. Okay? Now let's then move to, okay, ये हो गया, ये 4 वाले करते हैं। अब इसमें और भी मजा आएगा। ओके, नाउ y प्लस z, y प्लस z, सो दैट मींस ये दोनों एक ही डिजिट के नंबर हैं, ये अलग है, लेकिन ये वाला डिजिट हमको यहां पर मिल रहा है। ओके, ये वाला डिजिट हमको यहां पर मिल रहा है। सो इसका मतलब व्हाट इज द थिंग, और ये यहां पर एक ही वाले डिजिट है, 0 नहीं है, o है। ओके, लेकिन दोनों का वैल्यू एक ही होगा। सो वेरी सिंपल, अगर हम यहां पर इसको कर दें 99 प्लस 1, सो ये 1 यहां पर आ जाएगा, सो 100, तो ये दोनों बिल्कुल फुलफिल होते हैं। सो z इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 9, and o equals to 0. Okay, this is how you do it. Let's look at the next one. b5 plus 3d equals ed5. That means ये यूनिट का डिजिट यहां पर 5 है, यहां पर 10 में 3 है, और यहां पर यूनिट में 5 आ रहा है। ओके, सो दैट मींस अगर यहां पर 5 है तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। d की वैल्यू ऑब्वियसली 0 होगी, बिकॉज तभी यहां पर हमको नीचे 5 मिलेगा। तो ये हमको पता चल गया कि ये तो हो गया हमारा नीचे 30। ओके, तो अभी हमको b की वैल्यू पता करनी है, 30 हो गया। ओके, और यहां पर ed 5 आ रहा है, राइट? सो यहां पर, एंड यहां पर d की वैल्यू हमको मालूम है 0, सो दैट मींस अगर यहां पर हमको 0 चाहिए, सो देन हियर आल्सो इट विल बी a case of where you are able to get a, you know, carry forward. So that will make it 75 plus 30 equals 105. So यहां पर ये फुलफिल कैसे हो गया, b की वैल्यू हो गई 7, d की वैल्यू हो गई 0, ओके, एंड e की वैल्यू हो गई 1. So that is how you do it. kp plus kp, this is very easy. kp plus kp equals to prr.
नाउ केपी प्लस केपी का क्या मतलब हुआ? सो सेम डिजिट्स वी आर कमिंग एंड ये पी की वैल्यू यहां पर 1 है, सो दैट मींस sorry, यहाँ पर it will be the same p and this p is similar. So if we do 61 plus 61 equals 122. So यहाँ पर we are getting 2r which is 2 and 2, kp is 6, k is 6, p is 1 and the same p is coming here in the form of 122. Is this clear? Last C1 plus C क्या होगा? So C1 plus C equals to 1FF. So that means it is 100. It's a 3-digit number, right? And यहाँ पर 1 आ रहा है और इसका वैल्यू सेम है, और अगर हमको 1 आना है so that means हमको 90s में कुछ लेना पड़ेगा. So this is a big hint. 91 plus 9 equals 100. So F equals to 0, C equal to 9. This is how you do it. So as I'm saying, अगर नंबरों से खेलना पसंद है तो ये तुम्हारे बाएं हाथ का खेल हो जाएगा. इस तरह के क्वेश्चंस को अल्फामेटिक्स या क्रिप्टारिथम्स कहते हैं. यू नो दे आर क्रिप्टिक, यू नो दे आर ऑलमोस्ट लाइक रिडल्स. ये रिडल्स की तरह है, पजल्स की तरह है. ओके, पहला फिगर इट आउट क्वेश्चन हम करने के लिए अभी शुरुआत करते हैं. फिगर इट आउट क्वेश्चन में सबसे पहला है, ए लाइट बल्ब इज ऑन. डोरजी टॉगल्स इट स्विच 77 times. Will the bulb be on or off? तो ये पूछा गया है कि एक लाइट बल्ब ऑलरेडी ऑन है और उसके बाद डॉर्जी उस स्विच को 77 बारी यानी कि 77 टाइम्स उसको ऑन ऑफ करता है. तो 77th टाइम के बाद हमें ये बताना है कि बल्ब ऑन होगा या बल्ब ऑफ होगा. ओके, तो इनिशियल स्टेज क्या है? ऑन है. सो इसका मतलब जो पहली बारी जो कर रहा है, लेट मी डू इट हियर. So the first time, the first toggle that he does will be off because पहले on था, so that will be the first press, correct? Then the second toggle, that second time that he will put it on will be on, that is the second press. Okay, then similarly third press वो off हो जाएगा, right? So the pattern which is coming is 1, 3, 5, 7. It is coming to off. 2, 4, 6, 8. It is coming to on, right? So even number में on हो रहा है, odd number में off हो रहा है. So हमसे क्या पूछा गया है? Result for 77 toggles. Okay, 77 toggles के लिए हमसे पूछा गया है. तो उसका मतलब है 77 चूंकि ये ऑड नंबर है, सो दैट मींस इट विल बी इन द ऑफ पोजीशन. सिंपल, नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. ओके, लेट्स गेट टू द सेकंड क्वेश्चन व्हिच आई कैन टेल यू इज अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन. इसमें मुझे काफी कुछ समझाना पड़ेगा. लिस्विनी हैज अ लार्ज ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया. अब उस एनसाइक्लोपीडिया को जब लिस्विनी ने ओपन किया, उसमें से कई सारे लूज पेजेस बाहर निकलकर गिर गए. ओके, उसने 50 पेजेस शीट्स को टोटल किया और सभी 50 पेजेस दोनों साइड पर प्रिंटेड थे. यानी कि जैसे पेज होता है ना, 1, 2, दूसरा नेक्स्ट पेज 3, 4, यानी कि फ्रंट साइड पर ये और बैक साइड पर दूसरा पेज होगा ना, जिसका कि नंबर अगर ये 3 है तो बैक साइड पर 4 होगा, अगर 5 है तो 6 होगा, है ना, जैसे कि हर कोई किताब होती है. ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स. Can the sum of the page numbers of the loose sheets be 6000? Why or why not? तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर रेडी करके लिखा है तो कि आपको समझने में आसानी हो. ओके, सो लिस्विनी के पास कितने हैं? 50 शीट्स हैं जो कि लूज थे, जो कि गिर गए. हर शीट में 2 पेजेस हैं, यानी कि एक फ्रंट साइड एक बैक साइड, जिसका कि अलग अलग ऑब्वियसली जैसे हर किताब में होता है बुक नंबर होगा. कैन द सम ऑफ ऑल द पेज नंबर्स ऑन दी शीट्स बी 6000? यानी कि पूछा गया है कि 1 plus 2 plus 3 plus 4 going on till 49 plus 50, क्या ये 6000 तक होगा या नहीं, ये क्वेश्चन हमको पूछा गया है. तो पहला स्टेप क्या होगा? हाउ मेनी pages are on a sheet? Look at any sheet in a normal book. The first sheet has pages 1 and 2. The next sheet will have pages 3 and 4, then 5 and 6, then 7 and 8, then 9 and 10. Okay, तो ये हो गया. तो इसका मतलब क्या है कि हर शीट में एक ऑड पेज है और दूसरा पेज इवन नंबर है. 1 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर है, 3 ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर है. तो द सम ऑफ पेजेस ऑन वन शीट, कोई भी शीट ले लीजिए, विल बी 1 plus 2 equals 3.
देन दूसरे शीट पे क्या नंबर है, 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। देन तीसरे शीट पर 5 एंड 6 है यानी कि 11। उसके बाद 7 प्लस 8 यानी कि 15। तो इस तरह से सीक्वेंस जा रहा है। तो आपने नोटिस क्या किया, दैट द सम ऑफ टू शीट्स ऑन पेजेस ऑन ए शीट इज ऑलवेज एन ऑड नंबर। 1 3 7 11 15 वगैरह ये सारे के सारे ऑड नंबर्स जा रहे हैं। 1 नहीं है, सॉरी, 3 से शुरू होता है, सो इट इज ऑलवेज ऑड नंबर। सो हर शीट का सम इज एन ऑड नंबर। ओके, ये पहली बात है, आपको गौर करनी है। ओके, नाउ द डिफरेंस बिटवीन द सम्स ऑफ कंसेक्यूटिव शीट्स इज व्हाट, 4, बिकॉज 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस, 7 और 11 के बीच में 4 का डिफरेंस, 11 और 15 के बीच में 7 का डिफरेंस। इसके आगे जाएंगे तो आप पाएंगे 9 प्लस 10 दैट इज 19। तो 11 के बाद 15, 15 के बाद 19, ये इसमें भी 4 का डिफरेंस। तो हर में 4 का डिफरेंस आ रहा है। 7 माइनस 3 4, 11 माइनस 7 4, 15 माइनस 11 4, 19 माइनस 15 4, 23 माइनस 19 4 वगैरह वगैरह। सो हाउ डू यू राइट द सम ऑफ द nth शीट, जो nth शीट है, ओके, यानी कि 50वां शीट, उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमको मालूम है पहले शीट का सम है 3 यानी कि 1 प्लस 2। हर दूसरा शीट 4 और नंबर को ऐड कर रहा है ना। अभी जो हमने देखा जो डिफरेंस था, यानी कि शीट 2 वाले सम का है 3 प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 1। शीट 3 का सम है 3 प्लस 4 यानी कि 3 प्लस 4 इंटू 2। देन सिमिलरली 3 प्लस 4 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, बिकॉज 3 बारी वो 4 का डिफरेंस आ रहा है। सो फॉर्मूला क्या बनता है, द सम ऑफ द nth शीट, यानी कि जो 50वां शीट हमको ढूंढना है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आपके एग्जाम में 40वें शीट के बारे में बात हो सकती है, या 100th शीट के बारे में बात हो सकती है। यहां पे 50वें शीट की बात हो रही है। So the formula will be 3 plus 4 into n minus 1, because ये n minus 1 है ना, ये n है, right? फोर्थ सम शीट है, तो ये n है, तो ये n minus 1 है। So n minus 1 means how many times we added 4 after the first sheet. So the sum of 50 sheets will be 3 plus 4 into 50 minus 1, okay, यानी कि 49, और 49 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमें मिलेगा 196। 196 प्लस 3 विल बी इक्वल टू 199। अब यहां पर हमको एवरेज ढूंढना है, क्योंकि एवरेज क्या है, द फर्स्ट शीट एंड द लास्ट शीट एंड डिवाइडेड बाय 2। द फर्स्ट शीट का क्या था, 3 था, 1 प्लस 2 वाज इक्वल टू 3, एंड द लास्ट शीट का क्या है टोटल, 199। अब इसको 2 के साथ डिवाइड करो, तो यहां पर इन दोनों को मिला देंगे, तो ये बन जाता है 202। 202 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स 101। अब 101 को आप 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 5050। सो इट विल नॉट बी 6000, इट विल बी 5050। दैट विल बी द टोटल एज फार एज द नंबर ऑफ शीट्स का पेज नंबर्स को टोटल करने पर क्या मिलेगा, वो इट विल बी 5050। ओके, एक मिनट, मैं अपने मोबाइल को चार्जिंग पर डाल रहा हूं। चलिए, सो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। हियर इज अ 2/3 ग्रिड फॉर ईच रो एंड कॉलम, द पैरिटी ऑफ द सम इज रिटन इन द सर्कल। जो पैरिटी है यानी कि उसका ऑड नंबर है या इवन नंबर है, वो हमको इस येलो सर्कल में लिखा गया है, यहां पर यहां पर यहां पर और यहां पर। तो हमको वी हैव टू फिल इन द 3 बॉक्सेस विद ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स टू सैटिस्फाई द पैरिटी, ताकि हमको ये यहां पर इवन मिले और यहां पर ये दोनों जगह पर ऑड मिले। सो लेट्स एज्यूम कि अगर ये ए बी सी डी ई एफ की तरह हम बात करते हैं, राइट। तो अगर ए को, ओके, तो यहां पर अगर हमको इवन नंबर चाहिए, ओके, यहां पर इवन नंबर चाहिए, सो वी कैन मेक दिस एज एन ऑड नंबर एंड दिस एज एन ऑड नंबर। ऑड और ऑड को ऐड करेंगे तो हमको इवन नंबर मिल जाएगा। बी को हम इवन नंबर कर सकते हैं, हमको यहां पर इवन नंबर चाहिए, सो यहां पर भी इवन नंबर होगा। अब यहां पर ऑड हो गया, यहां पर इवन हो गया, और हमको ऑड चाहिए, राइट। तो इसका मतलब है यहां पर भी इवन नंबर होगा, बिकॉज इवन प्लस ऑड विल गिव अस एन ऑड नंबर। और यहां पर हमको क्या चाहिए, इवन, और यहां पर ऑड करना है, तो यहां पर ऑड होगा। यहां पर इवन कैसे होगा, ऑड प्लस ऑड बिकम्स इवन, इवन प्लस इवन विल गिव अस एन इवन नंबर। सो दिस विल बी द टोटल थिंग। सो फाइनली अगर हमको, इफ आई हैव टू डू लाइक दिस,
So this will become O, E, E, O, E, O. Right? So this will be the final thing. और इसमें आप कोई भी digit लगा सकते हैं. For example, you can put you can put 5, 8, 6, 3, 2, 1. Right? This can be the odd and even numbers. Right? Make a 3 by 3 magic square with 0 as the magic sum. All numbers cannot be 0. Use negative numbers as needed. तो यहां पर कैसे करेंगे इसको? So you can make it like this. For question number 4, you can make it if you have to use a negative mark also. अगर बीच में मैजिक सम 0 है तो यहां पर सभी 0 होने चाहिए. So 1 can be -3, 1 can be 3. यहां पर you can put 1, 1 and -2. You can put 2, -1, -1. तो ये दोनों, ये 2 -1 प्लस -1 -2 हो जाएगा. ये 0 हो जाएगा. राइट? ये 0 हो जाएगा. ये भी 0 हो जाएगा. सिमिलरली यहां पर -1, -2, -3, -3, ये 0 हो रहा है. ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. ये 0 हो जाएगा. Similarly, ये भी 0 हो जाएगा. 2 plus 1, 3, -3 equals 0. Right? So this is the way it will be. Similarly, diagonally also, it is becoming 0, and this side also it is becoming 0. Fill in the following blanks with odd and even numbers. Sum of an odd number of even numbers is what? Sum of an odd number of even numbers is even. है ना? बिकॉज इवन नंबर्स को कितना भी कैलकुलेट करो आप, 2, 4, 6, ये 3 ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स ऑफ इवन नंबर्स. सो दिस विल कम टू 12. राइट? सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ये भी इवन आएगा. कैसे आएगा? इट विल बी लाइक इवन नंबर. सो 1, 3, 5, 7 देख लेते हैं. ये हो गया 12, ये हो गया 4, यानी कि ये 16, which means this is an even number. Sum of an even number of even numbers. This is very obvious. This is even. Sum of an odd number of odd numbers. This will be odd. यानी कि अगर 1 plus 3 plus 5 करना है, so this will come to 9, which is an odd number. What is the parity of the sum of numbers from 1 to 100? So parity of 1 to 100 करना है तो total numbers कितने होंगे? Total number. This is 6th question. Total numbers will be equal to 100, which will be 50 odd plus 50 even. Correct? So sum of 50 odd numbers will be even. Correct? Similarly, sum of 50 even numbers will be even. So even plus even will be even. So that is the parity of sum of numbers from 1 to 100. Parity mein you basically have to say about odd or even. Two consecutive numbers in the Virahanka sequence are 987 and 1597. I'm sorry, I'm having a severe headache. What are the next two numbers in the sequence? What are the previous two numbers in the sequence? Okay, so 987 and 1597 कर लेते हैं. तो इसमें in the Virahaka sequence, each sum is the number, sum of two preceding numbers. So that means 987 plus 1597. This gets us 2584. अब क्या करेंगे? 1597 plus 2584 will give us 4181. अब हमको previous two numbers ढूंढने हैं. तो previous two numbers कैसे ढूंढेंगे? 1597 minus 987 will give us 610. अब आगे क्या करेंगे? 987 minus 610 will give us 377. So this is how the sequence. So the sequence will be 377, 610, 1597, 2584, 4181. This will be the entire sequence. 8th question. Angan wants to climb an 8-step staircase, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया. His playful rule is that he can take either 1 step or 2 steps at a time. For example, one of his paths is 1, 2, 2, 1, 2. In how many different ways can he reach the top? तो हमने ये already पहले कर दिया है, but anyway, we will quickly do it again. तो यहां पर हमको we can write 1 as
f1 ओके इक्वल्स टू 1 f1 या बेस 1 करके w करके भी यू कैन राइट दिस एंड f2 या w2 यू कैन राइट एज 2 1 प्लस 1 एक एक स्टेप करके कर सकते हैं या दो स्टेप एक साथ चढ़ सकते हैं. अगर f3 करना है इक्वल्स टू 3 इट कुड बी 2 प्लस 1 1 प्लस 2 या 1 प्लस 1 प्लस 1. इस तरह से गोइंग ऑन यू विल फाइंड दैट देयर आर 34 ways. F8 या W8 will be or I prefer W8 actually to do it. So how do I explain something like this? So if I have to explain this in detail, let's go through this in detail ताकि कोई doubt ना रहे, because ऐसे चीजों में doubt हो सकता है. So the ways to reach, okay, let me write it completely. Ways to reach the final step. Which is the final step? The final step is the 8th step, right? Is the 8th step. Final step will be ways, that will be n equals ways n minus 1, that is the 7th step, and ways n minus 2, which will be from the 6th step, because from the 6th step आप दो स्टेप को एक साथ चढ़ सकते हैं, 7th स्टेप से आप एक स्टेप आगे चढ़ सकते हैं. सो इन दोनों को टोटल करने से मिल जाएगा, बिकॉज ऑन स्टेप 7 पे he can take one step, correct? Is this clear? He can take one step. On step 6 he can take two steps. Okay, two steps यानी कि 2 और 1 plus 1 है ना. So the ways to reach step 8 will be इन दोनों को कंबाइन करके. सो दोनों को हम कंबाइन करेंगे. सो W8 या F8 को करेंगे W7 प्लस W6. सो दिस विल कम टू 21, दिस विल कम टू 13, और इन दोनों को मिला के हो जाएगा आपका 34. बिकॉज देयर आर 13 ways to reach the 6th step, 21 ways to reach the 7th step. So 21 plus 13 equals 34 different ways. What is the parity of the 20th term of the Virahanka sequence? Now, इसमें विराहांका के बारे में पूछा गया है, फिबोनाची के बारे में पूछा नहीं गया है. तो अगर विराहांका के बारे में बात करेंगे तो दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4. फिबोनाची होता तो 1 1 2 3 5 होता, राइट? सो 1 2 3 5 8 11 वगैरह. तो इसमें सो दैट वुड मीन सो दिस विल कम टू, सो इफ वी हैव टू डू दैट odd even sequence and just do a calculation, so it will mean that it will be the 20th figure and that will be an even number. लेकिन अगर फिबोनाची में करेंगे so it will come as an odd number and that number will be 6765. I think इसमें 20th even figure will be 10,946 is what I remember, if I'm right. Yeah, I think so. Yeah. Okay, इसको जरा कैलकुलेट क्रॉस चेक भी कर लेना. Now identify the statements which are true. The expression 4m minus 1 always gives odd numbers. क्या ये सही है या गलत है कि 4m की बात करें 10th का a 4m minus 1, तो अगर हम 4 में 4 into 1 minus 1 करें so that is giving us 3. 4 into 2 minus 1 करें so 8 minus 1 7. So this is giving us as odd, so that means this is true. Okay, then second B question. All even numbers can be expressed as 6j minus 4. All even numbers. Now that's important. All even numbers की बात की गई है. So 6j minus 4 will be 6 into 1 minus 4 will be 2, which is even number. Then 6 into 2 minus 4, that is 12 minus 4, 8, which is also even number. But what you're noticing is that उसमें all even numbers की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर 2 के बाद 4 मिस हो रहा है, 6 मिस हो रहा है. So that means this is not correct. अगर हम एक और करें 6 into 3 minus 4, so this is coming to 18 minus 4, 14. So that means 10, 12 भी मिस हो रहा है. So that means all even numbers are not getting counted. So this is false. Okay, because some numbers are getting skipped. C करते हैं. Both expressions 2p plus 1 and 2q minus 1 describe all odd numbers. 2p plus 1 और यहां पर भी वही लिखा है all odd numbers. जरा चेक कर लेते हैं. So 2p plus 1
equals 2 into 1 plus 1, which is 3. 2 into 2 plus 1 equals 5, right? तो ये odd numbers आ रहा है. इसके आगे देख लेते हैं. 2q minus 1 will be 2 into 1 minus 1, 2 minus 1, 1. 2 into 2 minus 1 equals 3. So यहाँ पर हम what we are finding is that यहाँ पर 2p plus 1 में 1 नहीं आ रहा है. So that means this will become false. It does not completely satisfy the condition that is mentioned in this question about describing all odd numbers. 1 is not getting counted by 2p plus 1. The expression 2f plus 3 gives both even and odd numbers. Check करके देख लेते हैं. 2f plus 3. 2f plus 3, ये D है, ये C था. 2f plus 3 will be 2 into 1 plus 3 equals to 5. 2 into 2 plus 3, 4 plus 3, 7, right? Similarly, वो 9, 11 आएगा. So यहाँ पर what are we asked? The expression gives both odd and even numbers. No, we are getting only odd numbers. So this is also false. Okay. Let's come to the last question of this chapter. Cryptarithm. Cryptarithm. UT plus TA equals TAT. मजा आएगा. UT plus TA. तो यहां पर क्या हो सकता है? तो यहां पर 3 डिजिट का नंबर है. ये दोनों डबल डिजिट वाले हैं. तो यहां पर what we find is that T दोनों में एक है यहां पर, right? So what we will find is that if we do 91 प्लस 10, तो ये t दोनों इक्वल हो जाता है. t का वैल्यू हो जाता है 1, राइट? t का वैल्यू हो जाता है 1. TAT इन दैट केस विल बिकम 101. सो ये t है, ये t है और ये a है. एंड u का वैल्यू विल बी 9 एंड a का वैल्यू विल बी 0. With this, we come to the end of chapter number 6, number play, which I really believe is the best chapter in your entire syllabus. I hope आपको पूरी तरह से समझ में आ गया, मजा भी आया. अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे. अभी 7th और 8th चैप्टर्स बाकी है, वो दोनों भी जल्दी से खत्म कर देंगे. आई होप यहां तक का आपको पूरी तरह से समझ में आ गया. It is important to practice, so get hold of a good quality question bank. We have recommended Oswald books. अगर आपके स्कूल ने कोई और कमेंट किए तो वो खरीद सकते हैं, लेकिन Oswald बुक खरीदनी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है. So please make use of that. Make use of the discount coupon code also and practice a lot. मैथ्स को जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. नहीं तो केयरलेस मिस्टेक्स होंगे. इस तरह के चैप्टर में नंबर्स के साथ जल्दी जल्दी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करने की जरूरत है. तो योर स्पीड हैज टू बी वेरी गुड, एंड व्हाइल यू आर डूइंग इट फास्ट, एंश्योर दैट यू डू नॉट मेक एनी केयरलेस mistakes. Tata, bye bye. Thank you very much. Namaskar. Subscribe to the channel and share the video with your friends and classmates. Bye.